All right, so we'll start soon. शुरू करते हैं जल्दी. Just give a moment. Can anyone let me know कि मेरा आवाज ठीक से आ रहा है क्या? Am I audible? आवाज आ रहा है क्या सभी? Just confirm me. Okay, so we'll start. एंड चैट बॉक्स में भी बता देना कि आप लोग कौन कौन से पेयर्स में एनालाइज करवाना चाहते हैं. सो just let me know in the chat box which pair you want to uh, analyze the market. Okay. It's been a while. मैं अपना साथ ना ऐसे आ नहीं पाया लाइव करना एंड देन मार्केट्स एनालाइज करना साथ में. बट या अभी कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस में आए. एंड इवन लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट दिस चार्ट. तो वही अभी भी पड़ा रह गया था. एंड लास्ट टाइम इन हमने ये मार्केट का जो डिस्कस किया था कि मार्केट का जो मूवमेंट होगा तो यहाँ से ये नीचे आके ऐसे ऊपर ही जाएगा. बट या इट्स हैपन राइट. तो उसके बाद मैंने अपना सेशंस ले नहीं पाया. बट नाउ टुडे आज से स्टार्ट होंगे ये इसके लिए गोल करेंगे. ओके यू यू ओके यू सी US 30 German 40 and gold. All right, great. Yeah. But before analyzing all the peers, we will analyze this one first. All right, the XY. So if we understand the XY, then according to the correlations, so it's very easy to understand the other peers also, right? And I think last time I already share about the correlations also. All right. So yeah, it's in the daily time frame. So overall, it's in daily time frame. It was in the downtrend, but somehow it's making it's a uptrend again, I would say now. But now it's in the kind of ranging market here. And this is the recently lows, this high, this inside high low means sell side liquidity. In this sell side liquidity, it was already take out, and now it's in the kind of range. So let's move to the
daily time, a 4 hour time frame. So basically we have buy side liquidity also here, and we have here buy side liquidity. But when we check in the H4, it's kind of downtrend here, right? Downtrend. High, slow, high, low, high, low, high, low, and which make a change of trend here. Change of trend, COT. Some people call it change of character, market structure shift, whatever is it. But I call it change of trend. All right. And we have low series. Somehow we have low, which is a bullish order block. And we have another bullish order block. Like they are all liquidity. All right. They are all liquidity. Here we have a liquidity, kind of like a demand area, right? They already collected, and here's the new this high failed to break this high with this SMS, but we have a high here, right? High here. The SMS and sense of trend. This low again. Somehow this is the uh, extreme supply area, right? I feel like you know, when we check in the H4, it's kind of a ranging part. I would prefer the 4 hour. I would prefer 4 hour, right? I would prefer 4 hour. See, it's an extreme part. Here we have rejections level zoned. This is also kind of rejections level. This is forming a I would say accumulation phase. So might be price might manipulate here, collect this supply area, extreme supply, and drop, right? And drop. Yeah, I was saying this way, yeah. But probably when we check in the higher time frame, see, now it's in the range, right? Here we have the liquidity side, liquidity, where now this we liquidity. It's a downtrend. If the price break this high, then it's a probably high chances to, make a move in the upward directions. But this would be a long way to go. मतलब ज़्यादा time लगेगा और right? So let's focus in here for hour. So probably like यहाँ से ये मैनिपुलेट के ड्रॉप करने का चांसेस लगता है मुझे, एंड यहाँ ये वाला कलेक्ट करके भी ऊपर जा सकते हैं ये वाला. बट somehow in this way I would suggest कि इसका अभी अभी ना एक ऐसा नहीं कि this is just to identify the market buys, market directions, not the exact confirmations to make the entries.
and we have a block here. So price might target this one, but according to the market movement or market structure, this is a change of trend. And now we have this BMS, or you can say BOS. Okay. And then now here, lower, higher high, higher low, higher high, higher low. It's in the butane, right? So this might form the higher high again here and drop to form the higher low. But yeah, but to make the balance, I feel like a price should move in this way. Uh, I will make a move, right? So I feel like a price should move in this way. Okay. Yeah, definitely we have block here. And then I would consider this level according to my analysis. This is the another MPA level. All right. So I will consider in this way for the DXY. So it's not a clear picture. Okay. It's not a clear picture, but let's see how the markets react. Okay, so this is for the DXY. So if we understand the DXY, it's trying to push down and up. And then let's move to the uh, USD, Euro USD, and then USD JPY. So in this case, like if according to the um, currency correlations, okay, currency correlations के according क्या होगा, इसमें लाइक जो ऊपर आता है और नीचे आ रहा है, दिस लाइक लेट्स से दिस DXY नीचे आ रहा है और ऊपर रहा है, एंड देन व्हेन वी चेक द USD, यहाँ पर नीचे आ रहा है एंड देन ऊपर, राइट? एंड ये यूरो USD चेक करूंगा तो फिर ये ऊपर आके नीचे जा रहा होगा, ऊपर आके नीचे, एंड देन इफ आई चेक दिस USD CAD, देन ये नीचे आके ऊपर जा रहा होगा, as it's something different, right? Yeah. It's CAD, yeah. Actually, ये इसकी CHF, ये नीचे जाके ऊपर and नीचे जाके ऊपर. So it's a kind of correlations, but CAD ऐसे, CAD में भी थोड़ा डिफरेंट है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है यहाँ से, बट थोड़ा वो है, बट इट्स ओके. इसमें क्या होता है कि correlations में anyone, I think, I hope you guys already know about the correlations, right? सभी को पता है ना? लो मैं खाऊंगा वो मैम. What's the correlations? So if you don't know, then let me know. I will explain in short. Let's check the Euro USD, right? Euro USD. So if I check in the weekly time frame, is there any key level? So it was in the downtrend move. It was in downtrend move. Oops. But this could break the other. It's an action trend. It's not a trend line. It's an action trend. I'm checking the market price action level. Okay. ये देखो, प्राइस एक्शंस ब्रेक दिस लेवल, मतलब चेंज ऑफ ट्रेंड यहाँ पर फॉर्म हो गया है.
हायर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ ट्रेंड वैसे हाई प्रॉब्लली की मार्केट ऊपर आने का चांसेस ज़्यादा है, राइट? So high chances to push up the market, right? यही होता है एक्शन ट्रेंड्स, बट दिस इज द वीकली। सो वीकली मूव है तो फिर बहुत टाइम लगेगा जस्ट टू अंडरस्टैंड द बाइस मेजर बाइस, इसलिए मैंने वीकली यूज किया है। तो अभी इसका यहाँ पर आएगा वीकली। सो इवन इन वीकली इट्स काइंड ऑफ डोजी टाइप, मतलब क्लियर पिक्चर नहीं है। सो लेट्स मूव टू द डेली टाइम फ्रेम। सो इन डेली टाइम फ्रेम हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो है, राइट? सो व्हाट यू गाइस एक्सपेक्ट इसके बाद? व्हाट यू गाइस एक्सपेक्ट? इसमें हाई है, मतलब यहाँ पर BMS है, and another high here. We have the BMS here, but इसका क्या है यहाँ पर? It's a buy side liquidity, right? तो इसका लो यहाँ पर है, लो यहाँ पर है। This is the low. Sorry, this is the low. This is the low again. Let's check out, थोड़ा माइनर में जाके भी देखते हैं। तो माइनर, if we read the market structure, it's the zone. If we read the market structure, it's in this still in the mm, uptrend, but somehow, according to the 4 hour high, low, we have the change of trend here again, right? In the 4 hour change of trend here. And then this one, MPA level, here we have the MPA level, yeah. Okay, we have this MPA level. SIF market structure low, and this should be the change of trend, right? And this is the low again. This is BMS, and but in this case somehow यहाँ पर देख सकते हो, you can see we have a block here, right? Demand area, and this is the double bottom, right? Double bottom, type 2 formations, double bottom, unable to fail to break this low, right? So, and this is the extreme part, extreme OV. It's already make a move. Yeah, yeah. And then this level, it's say IDM. So probably like a kind of price, ये वाला छोटा सा वो लिक्विडिटी है ना, इसको ट्रैक करके टेक आउट, देन अप, ऑलराइट? तो ऐसे आने का प्लान करूंगा, but again, as a reminder, this is not a final setup. This is just for the buy, identifying the bias। मार्केट में ऐसे हो सकता है, ऐसे बाय सिर्फ बायस
उसका बायस आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इट्स नॉट द फाइनल, एंड वी हैव अ गैप हियर टू। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए एंड देन इस लिक्विडिटी को, दिस डबल बॉटम वाला लिक्विडिटी को टेक आउट करने के लिए नीचे भी आ सकता है, up to here and then reverse, up to here then reverse, but for the entry we need to take the confirmations, proper confirmations, right? आगे जाके हम proper confirmations लेना पड़ेगा. But in this case, we have MPA label. Then here we have the another what to say, another key level also. ठीक है, 1 minute of, if we check in the 1 hour, तो 1 hour में down trend already है, but change of trend है, but it's not forming in a proper way जो मैं चाहता हूँ. Okay, so I feel like at least like price should come approximately around this level. Okay, manipulate करके इसका balancing accumulate, then this is the manipulations 1 2 and then distribute ऐसे होगा, ऐसे लग रहा है, right? तो yeah, this is for the euro. Sorry. Yeah, ठीक है. सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है. This is for the euro, all right. And then if we check about the GBP JPY, then okay, we have a high here. We, yeah, yeah, we have the excellent trend here. So it's a high chances to collect liquidity, all this liquidity drop होने के chances, right? But इसमें यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे ऊपर जाके नीचे आना, then ऊपर ऐसे होगा. But yeah, थोड़ा concept ये रख दो. Can you please zoom the screen a little? Can structure is too small. Okay. All right. ठीक है, अभी ये ठीक है. एंड देन क्या बताया था आप लोग ने? गोल, राइट? Yeah, goal. See, for the goal, I would say if we check in the daily time frame, even last time I predict that according to my analysis, I told you guys at least gold price will hit 4,000. Before I told you 4,280, and after that I told you 4,300. But after hitting 4,300, market reverse. It's drop more than 3,000, 3,500 pips, right? So approximate like almost 4,000, right? And yeah, if we check according to the fundamental analysis, definitely this gold price will hit 4,600 in the to 2026 December, till 2026 December. It's a high chances to hit the 4,600. And probably like even in 2000, yesterday I read some article, so it's a probably high chances to hit the even 6,000, 6,000 here in 2029.
Okay, but that's the long term, right? That's for the long term. But as of now, now you can see, we can see this one. It's in the ranging part. It's forming the dozy. It's forming, यहाँ पर dozy formations हो रहा है ना. So it's a indecision move. So it's I would suggest कि अभी ना structure और technical apply कर सकते हैं, but हम ना लॉन्ग टर्म के लिए प्रिडिक्ट करना सही नहीं लगता है, या इफ आफ्टर रीडिंग ऑल द फंडामेंटल्स तब जाके हम बता सकते हैं, प्रिडिक्ट बोल सकते हैं कि उसमें क्या हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ I don't suggest to do trade for long term in the goal, बिकॉज गोल के इतना इस तरीके से है कि अभी बहुत रिस्की है, एस यू नो, इसमें बहुत मतलब कब नीचे गिरेगा कब ऊपर जाएगा, अब हम कह नहीं सकते. एंड आई फील लाइक कि इसका भी ये एक नीचे में आने का चांसेस है, ऐसे लग रहा है, और नीचे आने का चांसेस लग रहा है. हाउ? बिकॉज मैंने पूरा हिस्ट्री चेक किया है, पूरा मेरा एक रेशोस मिन्स लेने का एक तरीका होता है, मेरा टेक्निक है. ओके. जो टेक्निक है, जितना आज तक ऑल टाइम हाई फॉर्म हुआ है, और जब जितना फॉर्म हुआ है, जब मार्केट गिरते, मार्केट क्रैश होते गिरते हैं, सो हाउ मच लाइक यू नो पीप्स और हाउ मच प्राइस मूव वेंस डाउन, तो वही चेक करता हूँ मैं. बट उसका कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, उसका उसका कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, probably price might come down to this gray zones and then last up to this white level. मतलब 3400 के आसपास से यहाँ तक भी आ सकता है, 3600 700 के आसपास भी आ सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि ये आएगा, बिकॉज वी डोंट नो राइट नाउ, आई डोंट नो एंड वी डोंट नो. कोई किसी ऐसे कुछ अभी कह नहीं सकते इसका मार्केट का. सो इट्स फॉर्मिंग अ डबल टॉप, राइट? तो यहाँ से ड्रॉप दिया है, यहाँ पर बहुत इनबैलेंस है, तो बैलेंस थोड़ा सा करके नीचे भी ड्रॉप हो सकता है, या फिर ये ब्रेकआउट हो गया तो फिर डेफिनेटली विल टारगेट फॉर दिस लेवल जो हाई है, उसका टारगेट करने का चांसेस बहुत है. बट यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी इन डाउन हियर. सो इसलिए ना अभी दिस इज इन द रेंजिंग पार्ट, दैट्स व्हाई मैंने मार्किंग तो करके रखा है, उसका जोन का मार्किंग रखा है. बट यू नो यहाँ पर भी मार्किंग रखा, ऐसे कंसोलिडेशन से देन ड्रॉप दिया, तो ड्रॉप देने के बाद हम उस टाइम एंट्री लिया है, यहाँ पर भी हमने एंट्री लिया है सेल्स का, यहाँ पर भी consolidations, then when the price make a move and get the confirmations from the price actions, तब जाके हमने लिया है. एंड ऐसे मूव डबल टॉप करके ड्रॉप किया एंड देन डबल डबल बॉटम करके ये पुश अप किया है, बट ये डबल टॉप करके घेरा है, यहाँ पर डबल बॉटम जैसा फॉर्म हुआ है, अभी पुश हो भी सकता है और गिर भी सकता है, आई डोंट नो, राइट? तो फॉर गोल आई सजेस्ट कि इस रेंज में है. And to be honest, I can't say कि for the long term, because even in the 1 hour candlestick, I didn't see any clear picture. यहाँ पर भी liquidate, this is also a zone here we have. तो इसमें यहाँ पर जोन यहाँ से मे बी रिवर्स भी आ सकता है, आई डोंट नो, आई डोंट नो ऑनेस्टली. मैं ऐसे बताना नहीं चाहता हूँ कि ये है वो है, बट जो है वही बताना चाहता हूँ. दिस इज द रिजेक्शन पार्ट. दिस इज काइंड ऑफ ऑल्सो रोन, लाइक यू नो, एक बात करें तो फिर दिस इज द मोमेंटम एग्जॉस्ट, यहाँ पर भी हो रहा है धीरे धीरे नीचे की तरफ. बट इवन if we check this part also, this is the exhausting the momentum also, right? Buyer sellers का. तो like it's very hard to make the decisions as of now. Okay. But if we talk about it for short term का बात करें, then definitely like maybe I'm not sure, maybe यहाँ से ये वाला कलेक्ट करके, लाइक यू नो, यहाँ से प्राइस, ये वाला इस लेवल का जो जोन है, यहाँ से कलेक्ट करके ड्रॉप दे सकता है यहाँ तक,
इसका जो एक्सट्रीम लेवल तक का यहाँ पर ये जोन है। ओके। और एक और चीज, इसे ब्रेक दिया तो फिर इसका ऊपर वाला टारगेट कर सकते हैं। दिस टू सिनेरियो वी हैव एज ऑफ नाउ। वी हैव टू सिनेरियो इन दिस कंडीशंस। क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं? ज़्यादा लंबे समय का मैं बता नहीं पाऊंगा ऑनेस्टली गोल का, बट थोड़ा सा शॉर्ट ये मंडे ट्यूसडे में हो सकता है, एंड इवन पूरा वीक लगा सकता है। सी, इफ वी चेक द मार्केट स्ट्रक्चर, ओके, इफ वी चेक द मार्केट स्ट्रक्चर इसका, तो आप देखते हैं। okay, ठीक है। सी, इफ वी चेक द मार्केट स्ट्रक्चर, वी हैव अ ब्लॉक हियर, राइट? वी हैव अ ब्लॉक हियर, एंड दिस इज द हाई अगेन। जो हाई है उसको टेक आउट करके नीचे आया, एंड दिस इज काइंड ऑफ अ लो। हियर वी हैव अ चेंज ऑफ ट्रेंड, राइट? लोअर टाइम फ्रेम का देख रहा हूँ मैं, चेंज ऑफ ट्रेंड। एंड देन यहाँ पर भी लो है, इसका तो ब्रेक नहीं दिया, बट समहाउ प्राइस टेक आउट दी दिस लिक्विडिटी लेवल। एंड यहाँ पर वी सी दिस इज अ लो हियर, which is BMS, right? ट्रेंड लॉक, यहाँ पर ट्रेंड लॉक हो चुका है, ट्रेंड लॉक हो चुका है। एंड देन यहाँ पर जब आते हैं, एंड आई वुड से दिस is the extreme supply area, right? And extreme supply area, और यहाँ पर MPA level भी है। I have a MPA level here, extreme. And then not only this might form a IDM inducement, right? तो इसमें क्या हो सकता है? एक केस तो ये हो सकता है कि यहाँ से टेक आउट करके इसका यहाँ से ये ड्रॉप हो सकता है यहाँ तक, और या फिर ऐसे धीरे धीरे करके इस लेवल तक आ सकता है। बट यू नो आई वुड से यहाँ तक, राइट? गॉट इट? और ये और बाद में देखें। Okay, yeah, in this way price might move if, again, if price break this level, तो इसके ऊपर लेवल हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक आएगा, तो यहाँ से वो करके प्राइस विल टारगेट दिस लेवल। ठीक है। तो यहाँ पर इन दिस कंडीशंस आई विल मार्क दिस लेवल एज आइडियल लेवल। नो, नॉट सॉरी, नॉट आइडियल, एमपीए लेवल। दिस माय एमपीए लेवल। ठीक है। तो यहाँ से ये हो सकता है। सो दिस इज फॉर गोल। बट रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है मार्केट में। ओके। एंड द नेक्स्ट इज US 30 German 40। या, लेट्स मूव। One of my favorites, favorite players.
बहुत टाइप हो गए। हाई मैंने प्ले, ओके, this low and then this low, low. So that it's in the range market, right? So high है ये, मतलब सिंपल सा ड्रॉप होने का चांसेस नहीं, हाई लो हाई देन लो, राइट? तो इसमें यहाँ पर भी आते हैं दोबारा। तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर हाई लो है। So in the 4 hour we have a break here, change of trend, COT. I have this level, at the level, consider this. So, yeah, but low, high, low, 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 low. Yeah, check yeah, something. Hello. Yes, sir. Good, good, sir. All right. Okay. Sorry. कॉल आ गया था, थोड़ा इमरजेंसी था इसलिए। सो हाई लो, यहाँ पर भी ब्रेक दिया है, यहाँ पर भी हाई है, बट देखते हैं ओवर में ना, where is the leadness? लीडनेस यहाँ पर है, सबसे इम्पोर्टेंट बीएमएस है। तो इस पे क्या होगा कि अपना जो मार्केट डायरेक्शन है ना, वो वी कैन आइडेंटिफाई आवर मार्केट डायरेक्शंस if we don't know to identify if we don't know how to identify the BMS or how to mark the BMS, then उसका मार्केट का जो डायरेक्शंस होता है ना, वो पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ओके, somehow in this level see, resistance becomes support, right? SNR, SNR level है ये वाला, this is the SNR level, बीएमएस है। बट यहाँ पर जो हाई हाई करके यहाँ पर आया है, सो यू कैन सी यहाँ पर हाई लो, हाई लो, लो लो लो, हाई है, बट अब वी विल consider this high as a BMS, not this one, okay, this one। तो यहाँ पर BMS फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, राइट?
बिकॉज कैंडलस्टिक डिडंट क्लोज हियर above this one. ठीक है, तो probably which means like still market is still in the downtrend, right? तो कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेट हो सकता है यहाँ पर। ओके, एक्सट्रीम वाला इसमें, एक्सट्रीम वाला लेवल में यहाँ पर ये ब्लॉक्स है, एक्सट्रीम वाला सेल साइड लिक्विडिटी। सो प्राइस माइट लाइक मूव आउट हियर टू टेक आउट दिस लिक्विडिटी एंड देन ड्रॉप होने का चांसेस है, बिकॉज प्राइस अभी स्टिल इन द डाउन ट्रेंड, price is still in the downtrend according to the 4 hour। बट माइनर मार्केट स्ट्रक्चर में देखेंगे जाए तो फिर अलग अलग उसका सिनेरियो होगा। मार्केट इसका 15 मिनट्स का देखे या फिर लाइक 30 मिनट्स का देखे जाए तो फिर यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, तो इस तरीके से देखेगा। ओके, इट्स डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आएगा यहाँ पर। हाई पे मिस ये ब्रेक का, सो या ठीक है। सो या, तो इट्स हाई चांसेस कि यहाँ से ड्रॉप होने का, आई वुड से ड्रॉप होने का चांसेस है। ओके, सो बट फॉर दिस वन इट्स नॉट फॉर्मिंग अ प्रॉपर बीएमएस। तो यहाँ पर व्हाई आई डिडंट कंसीडर दिस एज ए बीएमएस, बिकॉज यहाँ पर हायर हाई लोअर हाई था, लोअर लो है, लोअर हाई है, ये लोअर लो है क्या? नहीं। सो आई डिडंट कंसीडर दिस एज ए लोअर हाई। ओके, आई डिडंट कंसीडर दिस एज ए लोअर हाई। ओके, so that's why I didn't mark or consider this as a BMS. So yeah, it's a liquidity level. It's a liquidity level, but I didn't consider this one. All right. So here we go for the uh, German CR40. I would say price will move in this way. All right. एंट्री का लेवल और एंट्री का स्ट्रेटेजी अलग होता है। ओके, बट दिस इज फॉर द मार्केट बाइस, इस तरह कैसे मार्केट को मार्किंग करे या फिर किस तरफ जा सकता है। ओके, एंड लास्ट वन, लेट्स डिस्कस अबाउट US 30 and this will be the last one। okay, this will be the last one for US 30। The best time to do trade, the best time to do trade, I will show you this one. See the marking, best time. This here movement, see exact टाइम यहाँ पर, ये छोड़ो, ये वाला इसमें पता चल जाएगा, राइट? तो इसमें देखो न्यूयॉर्क ओपन सेशंस में, यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशंस जब न्यूयॉर्क ओपन होता है ना, यहाँ पर देखो जब न्यूयॉर्क ओपन होता है एंड दिस न्यूयॉर्क ओपन सेशंस, you guys can see the, थोड़ा ये कम कर देते हैं, ठीक, 5% ठीक है। क्या, सी न्यूयॉर्क सेशंस, न्यूयॉर्क सेशंस, तो मैक्सिमम टाइम ऐसे एक्यूमुलेट करके मैनिपुलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसका, अलग से नहीं, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशंस इसमें। तो इस तरीके से होता है, बट या उसको भी देखते हैं कि क्या है ना। सारे उस जितना भी यहाँ पर सेटअप है, सारे एक ही टाइम और मतलब वही एक फॉर्मेशंस होता है। दिस इज कॉल्ड दी यू नो प्राइस एंड टाइम कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजी है, प्राइस एंड टाइम कॉन्सेप्ट है। बट या, लेट्स सी अभी क्या है।
See, this was the high, टेक आउट हो गया है, एंड दिस इज द अगेन हाई which was the buy side liquidity. अभी प्रीवियस वीक हाई क्या होगा, ये वाला, दिस इज द liquidity level, previous week high, right? यही होगा ना, previous week high, and then previous week low will be this one. This is the liquidity level दिल्ली का. सो दिल्ली में उतना खास एंगल्फिंग थी दिल्ली दिल्ली का इतना हाई है. Okay. Yep, exactly. Upper high hand, this is the liquid previous week high, previous week low, this is the previous week low. So previous week low यहाँ पर है, and then यहाँ पर BMS हुआ है, right? So BMS होने के बाद what is this block? ये क्या होता है? This is the rejections OV for me. Okay, this is the rejections OV, and we have a void here, which means we have a liquidity here, this gap. People consider this as a fair value gap and all, right? But yeah, so probably next week क्या हो सकता है? Chances ये है 1 hour high two high. Okay. Yep. Yep. Already make the move, a beautiful move. Double top form हुआ है, and then this high and this high. We're unable to break this high, which is SMS. ठीक है, SMS form हुआ है, and then we have a this low, kind of ranging type है अभी, and then we have extreme OV level here. Okay, this is my extreme supply. Okay, extreme OV. Or let me check in the 1 hour. Yeah, ठीक है, 1 hour में भी यही है. So एंगल फ्लिप फॉर्म हुआ है, तो probably it's a high chances की प्राइस यहाँ से ऊपर आके नीचे ड्रॉप होने का. ओके, it's a high chances to drop the price. ठीक है. See, when I check in the 5 minutes, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, 1 2 3 4 a touch, three touch, three touch, three touch. Yeah, all right. And then this low, you can see forming the chains of trade, right? 15 minutes, let's say in the 15 minutes, 15 minutes. Yeah, we can consider this kind of this, let's see, this one. Yeah, so I will say in this way for the US 30. बट मंदे हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो होगा, देन आगे जाके ऐसे लंदन सेशंस, न्यूयॉर्क सेशंस में ड्रॉप होने का चांसेस है, राइट? देन आफ्टर दैट, इसके बाद पुशअप हो सकता है. ओके, पुशअप मार्केट ऊपर आ सकता है, बट एज ऑफ नाउ आई विल कंसीडर दिस पार्ट. ज्यादा लंबे समय और ज्यादा लंबे वो तो देख नहीं पाते ना. राइट. So that's all for today. If you guys have any questions, or if you guys want to analyze any other peer, just let me know in the chat box. I will do for you guys. Let's go. Let's go.
Silver, even silver also, it's kind of like unpredictable level, right? Probably it's a high chances to push up सिल्वर का भी बट बहुत ऊपर जा चुका है उसका भी कहीं ना कहीं लिक्विडिटी लाइक बैलेंस आउट होना चाहिए एमसीडी ऊपर आएगा इस लेवल तक then drop then will drop any questions. All right, that's all for today. I hope you guys enjoy the sessions and I will try my best level to come live sessions. At least I will try to conduct the live sessions at least one or twice a week. Okay, twice a week. All right then. Thank you very much, everyone. Have a wonderful evening. Good night. Good night. Good night. Probably it's a high chances to drop this price for it all. Yeah. Block to this block again. This one. Right. Let's see. Sir, yes, Benjamin. Goal, sir, goal symmetric triangle from top, bro. Yes, brother. Tell me, what's your questions? Symmetric triangle, no. I will consider this kind of symmetric triangle. Kind of symmetric triangle. From here also, it's moving downward. That's what I'm telling you last time. Anyways, I get the momentum exhaust. See, there's a momentum exhaust. From the both sides, price are exhausting their movement. Okay, so it's very unpredictable. But probably it's a high chances to drop the price. But let's see. All right. In 15 minutes. No, not in 15 minutes. Not in the 15 minutes. It's not a symmetric.
All right, guys. Thank you very much, everyone. Have a wonderful evening once again. Good night. Good night. Take care. All right.